Good morning to all of you. In today's class, I am starting section formula, which will be used in exercise 7.2. Section formula, as you know, section means part. So, what is section formula? Try to understand. This is a line segment AB. The coordinates of A is x1, y1, and the coordinates of B is x2, y2. AB is a line segment. The coordinate of A is x1, y1, and the coordinates of B is x2, y2. Now, there is a point P on AB which intersects AB in two parts, AP and PB. But I don't know here what is the ratio, how much part is AB, AP and how much part is PB. So let AP is M1 and PB is M2, that is the ratio. Like sometimes in the place of M1 2 will come, sometimes in the place of M2 3 will come, that is 2:3, 1:2, 3:4, etc. So let ratio be M1 and M2, and the coordinate of point P is xy. In section formula, we have to find the coordinate of the point P. That point intersects AB in two parts, AP and PB. So we have to find in section formula x and y. So how can you find x? See, so using section formula, x equal to x, which is the first coordinate of point P, and y, which is the second coordinate of point P. So x equal to M1, that is the first ratio, into x2, the first coordinate of B, plus M2, that is the second ratio, into x1, that is the first coordinate of A, upon M1 plus M2, the sum of the two ratios. So this is x equal to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, where M1 and M2 are two ratios. X1 is the coordinate of A, first coordinate, and x2 is the first coordinate of B. And y equal to, similarly, M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2. This is y. Y, that is the second coordinate of point P. Y equal to M1 into y2, second coordinate of B, plus M2, second ratio, into y1, that is the second coordinate of A, upon M1 plus M2. So this is section formula. In section formula, you find the coordinates of the point. That point intersects any line segment in two parts. So the first coordinate of that point is x and the second coordinate is y. So x equal to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, and y equal to M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2. So we have to learn this formula. Now, except this formula, some other formulas are also. Sometimes I don't use M1 here. Suppose AB is a line segment whose coordinates are x1, y1 and x2, y2, and P is a point which intersects AB in two parts, AP and PB. The coordinate of P is xy. Sometimes to find the ratio, we let here k ratio 1. In the place of M1 I have given k, and in the place of M2 I have given 1. So whenever you have to find the unknown ratio, then you can also use here the k ratio 1. Let required ratio be k ratio 1. Let required ratio be k ratio 1.
So using section formula, x equal to x, that is the first coordinate of P. So m1 x2, so m1 is here k, so k x2 plus m2 x1, m2 is 1 into x1 upon m1 plus m2, that is k plus 1, because m1 is k and m2 is 1. So you can write also in this way, kx2 plus x1 upon k plus 1, and y equal to ky2 plus 1 into y1 upon k plus 1, because y equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So m1 is k, ky2 plus m2 y1, that is 1 y1 upon k plus 1. It can be also written as ky2 plus y1 upon k plus 1. So this is y and this is x. So whenever you have to find unknown ratio, you can also use this formula. Now next case is, if P is midpoint of AB. अब यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला फॉर्म होने जा रहा है. फर्स्ट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला था. सेकेंड फॉर्मूला में केस था जब हम रेशियो को k रेशियो 1 लिए थे, उस केस में x और y का वैल्यू निकाला. अब जो तीसरा केस है उसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है P, उसको मिड पॉइंट ले रहा हूं AB का. इफ P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB लाइक दिस, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट यानी दैट इज P ठीक AB के बीच में है. तो if P is midpoint, then M1 and M2 both will be equal. So this is 1:1. And x1, y1 is the coordinate of A, x2, y2 is the coordinate of B, and xy is the coordinate of P. Now, what is x and what is y here in this case? So using section formula, x equal to, you know, x equal to m1 x2. So m1 is 1 into x2 plus m2 x1, m2 is 1 and this is x1 upon m1 plus m2, that is 1 plus 1. So 1 into x2 is x2, 1 into x1 is x1 upon 2. You can also write it in this form, x1 plus x2 upon 2. So x equal to x1 plus x2 upon 2. This is x if P is the midpoint of AB. Now y will be m1 y2, that is 1 into y2 plus m2 y1, that is 1 into y1 upon m1 plus m2, that is 1 plus 1. So 1 into y2, this is y2 plus y1 upon 2. So this is y1 plus y2 upon 2. This was the third case. If the point of intersection is the midpoint of given line segment, then to find the coordinates of that point, we can use section formula, but in the place of m1 we use 1 and in the place of m2 we use 1. Then you can find x and y. X equal to, directly we have to learn this, x1 plus x2 by 2, and y equal to y1 plus y2 by 2. So here there are three formula. First one was section formula, in which x equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, y equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Now in the second case, using section formula, if required ratio be k ratio 1, then x equal to kx2 plus x1 upon k plus 1 and y equal to ky2 plus y1 upon k plus 1. But if P is midpoint of AB, last case, in that case x equal to x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 plus y2 by 2. Now I am taking here one question. Try to understand. Using section formula, we have to solve this question. Question is, find the coordinates
find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1. See, try to understand. Question is, find the coordinates of the point which divides. Divides means intersects any line segment. The line segment whose the coordinates of the initial point is this and the final point is this. So here I will make a line segment here. This is a line segment AB. AB. The coordinate of A is given. This is the coordinate of A, 4, -3, and the coordinate of B is 8, 5. And there is a point P. As you know, the coordinates of P is always X and Y, but the ratio is given here. First ratio is 3 and second ratio is 1. That is AP ratio PB equal to 3:1. In this question, M1 is given 3 and M2 is given 1. X1, that is the first coordinate of A, that is given 4. Y1 is given -3. X2 is given 8 and Y2 is given 5. We have to find X and Y, that is the coordinates of point P. So using section formula, X equal to M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2. So putting the values of all, M1 is 3, X2 is 8, M2 is 1, X1 is 4 upon 3 plus 1, 24 plus 4 upon 4, that is 28 upon 4, that is 7. And Y equal to M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2. M1 is 3, Y2 is 5, M2 is 1 and Y1 is -3 upon 3 plus 1. This is 5 3s are 15 minus 3 upon 4, 12 upon 4, that is 3. Therefore, X equal to 7 and Y equal to 3. Now next question is, in what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the points A, whose coordinates is -6, 10 and B coordinates is 3, -8. इस क्वेश्चन में आपको रेशियो फाइंड करना है. इसी पिछले वाले क्वेश्चन में P का कोऑर्डिनेट्स निकालना था, X और Y का वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला से हमने निकाला था. बट इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है और सब कुछ दिया है. तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. ए बी लाइन सेगमेंट है. ए का कोऑर्डिनेट्स है -6, 10 और बी का कोऑर्डिनेट है 3, -8 और P एक पॉइंट है जो ए बी को दो पार्ट में इंटरसेक्ट करता है. इस P का कोऑर्डिनेट्स जो हम यूजुअली X और Y लेते थे, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, X का वैल्यू -4 और Y का वैल्यू 6 यहाँ दिया है कि डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड. तो ये पॉइंट जो पॉइंट डिवाइड करता है ए बी को, उसका कोऑर्डिनेट है -4, 6. तो मैंने P का कोऑर्डिनेट -4, 6 दिया. बट यहाँ रेशियो नहीं दिया है. तो हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं. हमने आपको फॉर्मूला में बताया था कि चाहे तुम M1 और M2 यहां लेट करके रेशियो निकाल सकते हैं, या K:1 लेके भी हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, जो हमने आपको सेकंड फॉर्मूला K के फॉर्म में दिए थे. रिक्वायर्ड रेशियो को K:1 लेट करके भी हम बना सकते हैं. तो हम यहां पे M1 और M2 लेट कर लेते हैं. लेट रेशियो भी M1 एंड M2. तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मुझे M1 M2 फाइंड करना है.
तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 plus m2. Now here x is given -4, that is the first coordinate of P. m1 is unknown, m1 के प्लेस पे m1 ही रखेंगे. x2 is here 3, m2 is again unknown, and x1 is here -6 upon m1 plus m2. -4 इक्वल टू m1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3m1 प्लस माइनस माइनस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2. अब यहां ब्राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. -4 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2. -4 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4m1, -4 को m2 से करेंगे, -4m2 इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2. अब हम m1 को हम एक साइड रखेंगे और m2 को दूसरे साइड ले जाएंगे. तो -4m1, अब इस 3m1 को इधर लाएंगे तो ये -3m1 हो जाएगा इक्वल टू -6m2, और इस -4m2 को उधर ले जाएंगे तो +4m2 हो जाएगा. तो -4m1 और -3m1 -7m1 इक्वल टू -6m2 प्लस 4m2 डेट इज -2m2. माइनस और माइनस कैंसिल दोनों तरफ, तो हो गया 7m1 इक्वल टू 2m2. तो यदि हम m1 अपॉन m2 करते हैं तो m2 के साथ जो कॉफिशिएंट है वो ऊपर आ जाएगा, और m1 के साथ जो कॉफिशिएंट है 7 वो नीचे आ जाएगा. सो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2 अपॉन 7, डेट इज m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 7. Therefore required ratio is 2 रेशियो 7. तो स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि मेरे पास रेशियो नहीं दिया था, जिसको मैंने m1 और m2 लेट किया, और बाकी सारे चीज दिए हुए थे. ए का कोऑर्डिनेट्स दोनों दिया था x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया था x2 y2, पी का कोऑर्डिनेट्स दिया था xy, सारे का वैल्यू दिया हुआ था. तो हमने वही सेक्शन फॉर्मूला यूज किया. x का जो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, हमने सारे वैल्यू को पुट किया. फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम m1 को LHS और m2 को RHS के साइड ले गए. वहां पे माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हुआ. 7m1 इक्वल टू 2m2 हुआ. जब हम m1 बाय m2 करेंगे तो m1 बाय m2 जब हम करेंगे तो m2 के साथ जो कॉफिशिएंट होगा, यानी m2 नीचे है लेकिन m2 का जो कॉफिशिएंट है वो उधर जाके ऊपर आ जाएगा, और m1 का जो कॉफिशिएंट है 7 वो नीचे आएगा. m1 रेशियो m2 2 रेशियो 7. Therefore required ratio is 2 रेशियो 7. Now students, you have to use this formula, you have to learn this formula and then solve some questions from exercise 7.2. So your homework is solve exercise 7.1 and 7.2. 7.2 में जितना भी बन सके बनाइएगा, and learn all formula. सारे फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं. So today I want to finish my class. Goodbye to everyone.